Students, welcome back to our video coaching. Today we will start a new topic, chemical bonding. Very important in whole chemistry, physical ho, inorganic ho, organic ho. Chemical bond is always formed, so chemical bonding is very important. So let us start the chapter with chemical bonding. What is a chemical bond? It is simply a force of attraction between two atoms or any other species by involvement of their electrons. Listen students, the force of attraction developed between two atoms due to involvement of electrons is known as chemical bond. माने टू एटम भितर इलेक्ट्रॉन रो इन्वॉल्वमेंट माने इलेक्ट्रॉन डोनेट करिकी हो एक्सेप्ट करिकी हो बा म्यूचुअली शेयर करिकी हो जो अट्रैक्शन दा डेवलप हुए दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग. इट मीन्स एथु आमे कंक्लूजन पाउछे इफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए माने इफ वन इलेक्ट्रॉन डोनेट करे एंड अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे देन सेमानक भितर गोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हबो. बिकॉज इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हेले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हबो दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग. सो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हेले काहे की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हबो. लुक एट एन एग्जांपल. सोडियम वन इलेक्ट्रॉन डोनेट कला Na+ हैला, क्लोरीन वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कला Cl- हैला. सोडियम जो इलेक्ट्रॉन दा डोनेट करछि क्लोरीन एक्सेप्ट करछि Cl- हैला. नाउ Na+ and Cl- will attract each other. Na+ and Cl- attract each other, so a force of attraction develops between them that is called a chemical bond. एमिति इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जोगु बा एक्सेप्टिंग जोगु बा म्यूचुअली शेयर जोगु. म्यूचुअली शेयर कौन टिके बुझेबी. म्यूचुअली शेयर माने कौन ना दुई जन मिसिकी भाग करिबा म्यूचुअली शेयर. फॉर एग्जांपल आमे गोटे बुक टे किनिया चाहूचे. बुक टा लेट 100 रुपीस. 100 रुपीस नाही आम पाखे तो मोर 50 रुपीस मोर आ गोटे सांगर 50 रुपीस मिसिकी बुकटा किणबू. मु भी मो दरकार बेले पढ़ी सी भी ता दरकार बेले पढ़ो आम मिसिकी एडजस्ट करूँ. दैट इज कॉल्ड द शेयरिंग ऑफ बुक. मु 50 रुपीस देली सी 50 रुपीस देला बुकटे किणिलु एंड बोथ शेयर कलु. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन शेयरिंग आल्सो टेक्स प्लेस. आगु आगु आम जानिबा. हियर खाली मन रख इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो बा एक्सेप्ट हो और शेयर हो कले से मानक भितर गोटे attraction develop haba that is called chemical bond. Now asiba discussion ku why a chemical bond is formed. माने why one atom donate electron, why one atom accept electron or why two atoms share the electrons ता ऊपर discussion करिबा. Why a chemical bond is formed means automatically why one atom donate electron, why an atom accept electron or why they share electron. They do this to fulfill their complete octet. Complete octet students, complete octet माने outermost orbit रे 8 electron possess करिबा होछि complete octet. Okay, and from atomic structure chapter we know most of the atoms are stable when they possess 8 electrons in outermost orbit. जानिछे हमें most of the atoms 8 electron जदि possess करंती outermost orbit रे then हमें ताको stable कहू. अवश्य there are few atoms like hydrogen, helium, lithium ए माने outermost orbit रे 2 electron हे कि भी stable ही जिबे. But higher elements गुड़ाक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नेशियम, कैल्शियम, आयरन एमिति दुई तीन टा को बाद देले all others become stable by having 8 electrons in outermost orbit. So octet rule is कौन ना 8 electrons present in outermost orbit then we say its octet is complete and they are stable. If जो एटम मानकर octet complete नाही they will try to complete their octet to become stable. जो मानकर outermost orbit 8 electron नाही they will try
to donate 8 electron, they will try to donate electron or accept electron or share electron to have 8 electrons in their outermost orbit, and we say there the octet is complete and the atom is stable. So जो माने इलेक्ट्रॉन डोनेट करिकी बा एक्सेप्ट करिकी बा म्यूचुअल शेयर करिकी ऑक्टेट कंप्लीट करि पारिबे से माने इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवे बा एक्सेप्ट करिवे और शेयर करिवे, बिकॉज एवरी एटम चाहंती से मानकर ऑक्टेट कंप्लीट करिकी स्टेबल हेबा पई, माने आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे 8 इलेक्ट्रॉन रखिकी स्टेबल हेबा पई. लुक एट टू द एग्जांपल. हियर सोडियम रो थिला 281, सो सी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करदेला सो दैट 28 हो 28 हो स्टेबल हो गला. 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कला एमती आसला 28 स्टेबल हो गला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. क्लोरीन रो थिला 287, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कला 288 हो गला, आर भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे 8 इलेक्ट्रॉन हैला, सो दे बिकम स्टेबल. सो जो मानकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे 8 इलेक्ट्रॉन नाही, दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और शेयर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, सो ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड. तेणु कौन लिखा है स्टूडेंट्स माने नोट देखो, व्हाई ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड मान लिखा है एटम्स आर स्टेबल इफ दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट. ऑक्टेट कंप्लीट है एटम स्टेबल, वी नो एटॉमिक स्ट्रक्चर पठरो. इफ दे डू नॉट हैव कंप्लीट ऑक्टेट, if semanangar octet complete nahi, then they donate, accept or share electron to become stable or to make octet complete. Donate करके हो, accept करके हो, बा share करके हो, octet complete करती and stable होती. Best example of this 281 electron donate करके octet complete कला stable हैला. During this process, remember very important, during this process a force of attraction develops known as chemical bond. Already I have explained. Now a important point is coming to discuss. If a chemical bond is formed, then energy is absorbed or energy is released. Okay. Most of cases रे हम माइंड को आसुची मोस्टली बॉन्ड फॉर्म हेले एनर्जी absorb हम माने आम एनर्जी देबाकू पड़िबो. जेहेतु बॉन्डटा फॉर्म होची तेणु आम भाविबा आम एनर्जी देले बॉन्डटा फॉर्म हम, बट एक्चुअल इज एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड. wherever a bond is formed, energy is released. कहीं सुन पिला माने आमर सृष्टि रे यूनिवर्स रे अनस्टेबल और स्टेबल, निश्चित भाव अनस्टेबल रु स्टेबल हैला बेले एनर्जी रिलीज हम. एनी सिस्टम इन दिस यूनिवर्स, एनी ह्यूमन बीइंग हो, एनी नॉन लिविंग सिस्टम हो, इफ अनस्टेबल रु स्टेबल को जीव निश्चित भाव से एनर्जी रिलीज करिवो. गोटे बेस्ट एग्जांपल दूची, मुझे छिड़ा होइछि, देन मु बसी जीवी. स्टैंडिंग करवा आउ बसिबा व्हिच इज मोर स्टेबल? क्लियरली बसीगले हूँ मोर स्टेबल. देन मु देखी एनर्जी कौटी मोर अधिका थिला, मु छिड़ा होइछि, मोर पोटेंशियल एनर्जी माने स्थितिज शक्ति जार फॉर्मूला इज इक्वल टू mgh. सो से पोटेंशियल एनर्जीटा छिड़ा हेले मोर ना बसिले मोर, फॉर्मूला हूँ mgh. सो मु छिड़ा हेले ग्राउंड रो अधिका हाइट रे रहउछि, बसीगले ग्राउंड रो कम हाइट रे रहउछि. सो ऑब्वियसली छिड़ा हेले मोर एनर्जी, बसिले लेस एनर्जी. बुझिपार मु पोटेंशियल एनर्जी बा स्थितिज शक्ति इक्वल टू mgh कथा डिस्कशन करुच्ची. मुझे जो छिड़ा होइछि ग्राउंड टू मोर हाइट रे अच्छी, h मोर हैला, सो mgh मोर हैला, सो मोर पोटेंशियल एनर्जी मोर हैला. मुझे जो बसीजी से h कमिज, h कमिगले मोर पोटेंशियल एनर्जी लेस हो. ता माने मु बसी सॉरी मु छिड़ा होता बेले मोर एनर्जी मोर, मु बसीगली जिते बेले मोर एनर्जी लेस. सो छिड़ा होता सिचुएशन रे मुझे बसीजी आई एम लिविंग एनर्जी, मोर एनर्जी मोर थिला कम हो गला, आई एम लिविंग एनर्जी एंड ऑल्सो आई एम बिकमिंग स्टेबल. सो इमेजिन करो छिड़ा होती बसीगली स्टेबल हेली, एनर्जी रिलीज कली. सो सृष्टि रे एनी सिस्टम स्टेबल हब माने एनर्जी रिलीज हब. सो केमिकल बॉन्ड केतेबेले फॉर्म होची, जेतेबेले एटम गुड़ाक स्टेबल होचंती सेतेबेले केमिकल बॉन्ड फॉर्म होची. सो निश्चित भावे एनर्जी रिलीज हब. सो मन रख स्टूडेंट्स,
whenever a chemical bond is formed, energy must release. So लिखली, if a chemical bond is formed, then they become stable by releasing energy. Very important line. सृष्टि रे जेबे भी जी स्टेबल हबो से एनर्जी रिलीज करिवो. गोटे स्प्रिंग को मु टाणी की छाड़देवी, छाड़देले कौन कर रिटर्न कर माने ता भितर थिबा एनर्जी से छाड़ी दउछि, रिलीज करिकरी ओरिजिनल पोजीशन को आसिकरी स्टेबल होउछि. सो जेबे भी जड़े अनस्टेबल को स्टेबल जीव से एनर्जी रिलीज करिवो. Hence, wherever and whenever a chemical bond is formed, then energy released. जोठी भी हो जमती भी हो chemical bond form हेले energy release हबो. आउ से पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच जो एग्जांपल टा देली तार एठी नोट दउनी बिकॉज़ सेटा फिजिक्स रे अछि, फिजिक्स रे तार क्लियर नोट अछि. एठी खाली स्टेबल हेले एनर्जी रिलीज हेबा पई से एग्जांपल टा देली बुझाया पई. एठी हमें मन रखिबा जे केमिकल बॉन्ड फॉर्म हेले एटम स्टेबल होंती एंड एटम स्टेबल हेला माने एनर्जी रिलीज करंती. These are the introductions about chemical bond. Now come to the point, types of chemical bond. Many types of chemical bonds are there, but in our 11th syllabus, only 4 types of chemical bond we will discuss. 1 is ionic or electrovalent, 2 is covalent, 3 coordinate, 4 hydrogen bond. These 4 bonds हमें detailed discussion करिबा. Another point students, chemical bonding chapter टा पूरा बोर्ड ऊपर मु नोट टा लिखिबी, बोर्ड रू देखिकी नोट लिखिबो और सेपरेट नोट दिया जीव नहीं. दिस चैप्टर टा पूरा. ओके, सो राइट द नोट. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट ionic bond or electrovalent bond. What is ionic bond or electrovalent bond? The chemical bond formed due to donation and acceptance of electrons. One atom electron donate करिबो, another atom electron accept करिबो, जो chemical bond टा form हबो, that is called ionic bond or electrovalent bond. Example we have discussed NaCl. So कौन लिखिला नोट रे? This bond is defined as, माने ionic or electrovalent bond is defined as the force of attraction between the ions. टू आयन्स इलेक्ट्रॉन डोनेशन और एक्सेप्टेंस पर टू आयन्स फॉर्म होची, सेमानक भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन्स केमिति फॉर्मड हला, रेज्ड ड्यू टू आयन्स गुडा केमिति रेज हला, केमिति डेवलप हला, रेज्ड जगह रे डेवलप्ड लिखले भी चलिबो. आयन्स डेवलप्ड ड्यू टू, डेवलप्ड हला टिके इजीली बुझी परिबो, डेवलप्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम. बुझी परलो? कौन कहला? इट इज द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू आयन्स डेवलप्ड. आयन्स गुडा केमती डेवलप हला? डेवलप्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स. वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हेबा जोगु आयन डेवलप हला. से आयन डेवलप हेबा जोगु सेमानक भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हला. इलेक्ट्रॉन टा कोठु ट्रांसफर हला? फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम. एग्जांपल NaCl molecule. You know and understand it very well. Another example discussion करिबा calcium chloride molecule. Look at calcium रो जदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेबा 2882 आसीबो. calcium रो नंबर होची 20 एटॉमिक नंबर, सो सजेले 2882 आसीबो. क्लोरीन रो 287 आसीबो. दिस क्लोरीन रो आल्सो 287. वन calcium को 2 क्लोरीन अटैच अछंती. सो calcium कोन करिवो? आउटर मोस्ट ऑर्बिट रो 2 इलेक्ट्रॉन भितर 1 इलेक्ट्रॉन दिस क्लोरीन को डोनेट करिवो, अनदर इलेक्ट्रॉन दिस क्लोरीन को डोनेट करिवो. सो calcium इलेक्ट्रॉन 2 डोनेट कला, तेणु calcium 2+ हे गला एंड तार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हे गला 288. दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हे गला. क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कला, Cl- हला 288 हला. दिस क्लोरीन अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कला, Cl- हला 288 हला. सो calcium 2+ टा दिस क्लोरीन माइनस सहित आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करिकी calcium chloride molecule फॉर्म करिवो. Okay, very simple example of ionic bond or electrovalent bond. This is very easy, you know in class 10th. Just I'm going to revision कर दूँचु as it is also present in 11th syllabus. Now come to note. This is important. In between two atoms, only one ionic bond is formed. Listen to this line carefully. In between two atoms, only one ionic bond is formed. माने एनी 2 एटम लियो से भितर ओनली 1 आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म हबो.
टिके पूर्व मु NaCl रो डिस्कशंस करथिली Na प्लस और Cl माइनस भितरे ओनली वन आयोनिक बॉन्ड हियर आमे देखुचे कैल्शियम क्लोराइड रे आमे देखुतबा 2 आयोनिक बॉन्ड कैल्शियम 2 प्लस रो दिस क्लोरीन सहित 1 आयोनिक बॉन्ड एंड कैल्शियम 2 प्लस रो दिस क्लोरीन सहित 1 आयोनिक बॉन्ड सो टोटल आयोनिक बॉन्ड हैला 2 बट लुक एट these two atoms भितर only one ionic bond हिची second atom टा these two atoms भितर हिची so any two atoms नियो सेमानक भितर ionic bond केते अछि only one calcium 2 plus of this chlorine भितर one ionic bond calcium 2 plus of this chlorine भितर one ionic bond so तारा two ionic bond अछि सत but any two atoms नियो ताको भितर one ionic bond is form हबो so very important, in between two atoms only one ionic bond is formed. Calcium chloride molecule कथा लिखा है in calcium chloride molecule total number of ionic bonds is 2. हमें देखिले calcium chloride molecule रे total number of ionic bonds is 2 but in between any two atoms बाछो सेमानक भितर number of ionic bond हबो 1. Already mu बुझेछि so final conclusion very important students any two atoms हिथौ सेमानक भितरे आयनिक बॉन्ड फॉर्म हेछि 1 हबो 0 भी हेइ पारे आयनिक बॉन्ड फॉर्म न हेइ पारे बट आयनिक बॉन्ड फॉर्म हेछि माने 1 हबो then second note is ionic bonds are the strongest bond among all chemical bonds because one positive ion one negative ion with attraction होची so ionic bonds are the strongest bonds among all other bonds हम जो 4 types रो bond discussions करछे बाउरी many types रो bonds अछि हम higher studies रे discussion करिबा all bonds भितरे ionic bonds are the strongest among all chemical bonds. You know students, this video series is the fundamental class 11th board exam level. We have separate video series for JEE NEET. Though in those videos we have detailed discussed all types of chemical bonds. But in this video series we are discussing about those type of chemical bonds present in 11th syllabus sufficient for board exam. Write down the note from the board. Then we will go to discuss properties of electrovalent compound. Ionic compound by electrovalent compound माने कौन जो compound भितरे ionic bond और electrovalent bond अच्छी that is called ionic compound or electrovalent compound. Example NaCl molecule is an electrovalent compound, calcium chloride molecule is an electrovalent compound. हमें सही electrovalent compound बा ionic compound और ionic bond रो character विषय रे discussion करिबा एतिकी लिखि दियो. Students, now we will discuss properties of ionic compounds, okay, or electrovalent compounds. So first is they are hard and brittle. Ionic compounds are hard and brittle. For example NaCl it is hard and brittle माने हमें जदि big NaCl piece टा नेबा कोडी force पकेबा ताले सेट से break हे जिवो भांगी जिवो so they are hard and brittle. hard काहे कि ना हाथ रे हमें ताको पाउडर करि परिबानी force apply करिया उपडियो पाउडर करिया पे so hard and कोडी जदि force apply करिबा लंबा NaCl piece टा नेबा एते लंबा NaCl piece टा नेबा कोडी जदि force apply करिबा सेट से break हे जिवो so hard and brittle. Then these compounds possess definite geometry due to definite arrangement of ions. A property of बुझाओ they have definite geometry due to definite arrangement of ions. Definite माने fixed constant, geometry माने shape. माने in any ionic compound ion गुड़ा का जो arrangement ही थिबे से arrangement टा break हुए नहीं से arrangement टा constant रहे. हम गोटे big NaCl piece टा नेबा ता भितरे Na plus और Cl minus ion जेमिति arrange ही थिबो हमें जो ताको break कर देबा ताले ता भितरे भी Na plus और Cl minus ion arrangement टा समित रहिबो. इवन हमें ताको जदि powder form को नहीं जिबा powder form को नहीं गले मध्य Na plus और Cl minus ion रो shape टा सेमति ही रहिबो माने Na plus और Cl minus ion गुडा को arrangement टा सेमति ही रहिबो. So in ionic solid
सॉलिडटा बड़ पीस होगी थाउ कि छोट पीस होगी थाउ कि पाउडर होगी थाउ ता भितर आयन गुड़िकर अरेंजमेंटा फिक्स्ड बा कांस्टेंट होगी रहे सो आमे कहू दे हैव ए डेफिनाइट ज्योमेट्री ड्यू टू डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ आयन्स डेफिनाइट माने कांस्टेंट और फिक्स्ड देन कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन कहूँ इन सॉलिड स्टेट सच कंपाउंड्स are bad conductors of electricity but in molten state or solution state they are good conductors of electricity due to movement of ions. तो प्रॉपर्टी टाको दी भाग करके पढ़िबा फर्स्ट भाग कहूँ इन सॉलिड स्टेट सच कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड NaCl जदि नेबी ता भितर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पारिबनी बिकॉज सॉलिड स्टेट रे आयन गुड़िक भितर थिबा अट्रैक्शन वेरी हाई थाए Na प्लस और Cl माइनस भितर अट्रैक्शन टा वेरी हाई थाए वाटर रे बुड़े देले सॉल्यूशन कर देले से अट्रैक्टिव फोर्स टा टिके कमी जाए सो आयन गुड़िक मूवमेंट करती सो सॉल्यूशन स्टेट रे इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इन सॉलिड स्टेट ionic compounds cannot conduct electricity because solid state रे ion गुड़िक भितर force of attraction very strong थिबो they cannot move we know from class 10th charge move हेले ही current develop हबो solid state रे charge रे ion गुड़ाक strongly attracted to each other do not move so they do not form current electric current okay. So लिखिला in solid state such compounds are bad conductors of electricity but in molten state or solution state माने water add कर देले solution state molten state माने कौन solid टाकू water add करिबानी but heat करिकी ताकू liquid state को नेबा solid NaCl को heat करी ताकू liquid करिबा that is called molten state और फ्यूज्ड स्टेट आ गोटे वर्ड भी तार मन रख molten state और फ्यूज्ड स्टेट एंड वाटर ऐड कले सॉल्यूशन स्टेट सो स्टेटा जो molten हो जिवो बा सॉल्यूशन हो जिवो दे बिकम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन्स बिकॉज वी नो सॉलिड स्टेट रे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स इज वेरी हाई लिक्विड कि सॉल्यूशन जदि हला ताहेले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स वेरी लेस सो दे कैन मूव ions can move in solution state or molten state but they cannot move in solid state so solid state they are bad conductor of electricity molten state or solution state they are good conductors of electricity molten state रे एते good नुह solution रे very good but molten state रे टिके करंट देखा जिवो solid state रे तो किछि भी करंट देखा जिवोनी molten state रे टिके करंट देखा जिवो और solution state रे they are very good conductors of electric current okay so molten state कौन ना solid state को आमे जो हीट करिबा से मेल्ट हेकरी लिक्विड हबो that is its molten state okay then asila ionic bonds are polar in nature hence ionic compounds are polar in nature so ए जो पोलार रो मीनिंग दा तमे बिटिके बुझी परिबनी दिस चैप्टर भितरे आमे पोलारिटी पोलार नेचर गोटे हेडिंग अछि डिटेल सेठी आमे बुझेबू हियर ओनली रिमेंबर आयोनिक बॉन्ड्स आर पोलार इन नेचर एंड आयोनिक कंपाउंड्स आर आल्सो पोलार इन नेचर व्हाट इज पोलार आमे अति शीघ्र बुझिबा डोंट वरी दिस पॉइंट माइंड भितर रखि थाओ आयोनिक बॉन्ड्स आर पोलार इन नेचर एंड आयोनिक कंपाउंड्स आर आल्सो पोलार इन नेचर Then come to next property. Such compounds has high melting point and boiling point. Already I कही ionic bond is the strongest bond. So bond ta break करिया पे more energy is required, more heat energy is required. So these compounds has high melting point and boiling point. Next है reaction by such compounds are fast. आयोनिक कंपाउंड जदि किसी रिएक्शन करिवो बहुत फास्टली करिवो सो रिएक्शन मेड बाय आयोनिक कंपाउंड्स आर फास्ट व्हाई टिके परे जानिबो प्रेजेंटली मने रखो रिएक्शन परफॉर्म्ड और रिएक्शन कंडक्टेड बाय एनी आयोनिक कंपाउंड इज वेरी फास्ट एंड स्पीड then asila students a very important property such compounds do not exhibit isomerism this compound गुड़ाक आइसोमेरिज्म देखांती नाही do not exhibit isomerism
आइसोमेरिज्म कौन टी बुझेदेवी लिसन स्टूडेंट्स पोलार कौन ये बुझौनी आइसोमेरिज्म कौन ये बुझे दूची बिकज पोलार टिके बड़ एरिया ताको गोटे सेपरेट साइड हेडिंग करिकरी आमे पढ़िबा टिके आगो को एंड पोलार रो नेचर कोभालेंट बॉन्ड सहित भी अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सहित अच्छी सो ये खाली कहली पोलार टिके मन रखि दियो आयोनिक बॉन्ड्स आर पोलार इन नेचर एंड आयोनिक कंपाउंड्स आर पोलार इन नेचर पोलारिटी विषय आम टिके परे पढ़िबा बट आइसोमेरिज्म टा छोटिया जिनसटा एठी कहिदेले चलिबो सो एठी आइसोमेरिज्म कोन बुझेई देबी एंड मन रखो आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट शो दिस आइसोमेरिज्म okay ताले what is isomerism students isomerism is the process in which a single formula can represent two different compounds गोटे सिंगल फॉर्मूला रे दीटा कंपाउंड आम रिप्रेजेंट करि परथुबा से कंपाउंड दीटा टोटल डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखौथिबे ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स okay so isomerism is the process in which a single formula represent more than one compounds due to different arrangement of atoms same formula atom गुडा कर arrangement change हे गले दीटा different compound दोचंदी एम से compound गुडा कर properties physical properties and chemical properties are total different for example gote nochi C3H6O this is the formula C3H6O को arrange करके मैं एमिति लिखि परिबी C2H5CHO देखो here C3H6O अछि also एमिति लिखि परिबी CH3COCH3 here also C3H6O अछि this compound भी C3H6O formula this compound भी C3H6O formula खाली arrangement of atoms different atom गुडी एठी अलगा टाइप रे अरेंज हेछि एठी अलगा टाइप रे अरेंज हेछि टिके 10th क्लास पाठ माने पकाओ दिस इज एन aldehyde and this is an ketone physical properties chemical properties total different but both are represented by single formula C3H6O so if a single formula represent two or different more compounds whose chemical properties and physical properties are totally different then the process is called isomerism and these two are called isomers of each other process टा होची isomerism गोटे सिंगल फॉर्मूला मोर देन वन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करथुबो से मानकर एटम रो अरेंजमेंट डिफरेंट थिबो सो दैट से मानकर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हबो ओके now similarly another formula C2H6O C2H6O को जदि मैं अरेंज करबी गोटे पाइबी C2H5OH another पाइबी CH3OCH3 look at here also C2H6O here also C2H6O but 10th class पाठटी माने पकाओ this is an alcohol and this is an ether both are represented by same compound C2H6O same compound one represents alcohol and another becomes ether alcohol is C2H5OH C2H6O this formula also ether C2H6O okay so what happens the same formula C2H6O represents two different compounds one is alcohol other is ether okay so this is the process of isomerism and students ionic compounds do not exhibit isomerism ionic compounds never show this process isomerism all these are covalent compounds tike par am padhiba covalent compounds all these are covalent compounds can exhibit isomerism but ionic compounds do not exhibit isomerism this much is the properties of ionic compounds please write down students now we will discuss a term electrovalency what is the electrovalency the number of electrons donated by an atom or accepted by an atom during formation of ionic bond is electrovalency आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कला बेले एटम जतिकिटा इलेक्ट्रॉन डोनेट कला बा जतिकिटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कला ताको तार इलेक्ट्रोवैलेंसी कहा जाउछि फॉर एग्जांपल NaCl रे Na 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करछि सो Na रो इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 एंड क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करछि सो क्लोरीन रो इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कथा माने पकाओ calcium donate 2 electrons so electrovalency of calcium is 2
chlorine accept one electron, so electrovalency of chlorine is 1. So the number of electrons lost or gained माने donated or accepted by an atom during the process of ionic bond formation is known as electrovalency. Example, in NaCl molecule, electrovalency of Na is 1 and that of Cl is 1. In CaCl2 molecule, electrovalency of calcium is 2 because calcium donate 2 electrons and that of chlorine is 1. Chlorine molecule no, chlorine atom. Chlorine atom is 1. Very simple. This is the meaning of electrovalency with examples. Now let us discuss an important thing. Factors on which formation of ionic bond depends. टू एटम्स भितर आयोनिक बॉन्ड हम कि नहीं केमी जना पड़िबो बा फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड टा व्हिच फैक्टर ऊपर डिपेंड करछि. फर्स्ट डिपेंड करछि आयोनाइजेशन एनर्जी. माने अछि आयोनाइजेशन एनर्जी कोन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन्स. So ionization energy जदि low हबो ताले an atom can easily donate electrons and ionic bond form हेबा easy हबो. So ionization energy factor टा कोन ना the ionization energy of one atom should be low. जो दुईटा एटम भितर बॉन्ड फॉर्म होछि वन एटम रो आयोनाइजेशन एनर्जी लो हिथिले आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इजी हबो. अदर एटम कौन कर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर तेणु तार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हेबा दरकार. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जे कर तार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हेबा दरकार. सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अदर एटम शुड बी हाई. ये हेले द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अदर एटम शुड बी हाई. जो एटम टा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर तार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी वेरी हाई. सो दुईटा फैक्टर आम डिस्कसन कले. वन इज आयोनाइजेशन एनर्जी, अदर इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. गोटे आटम रो आयोनाइजेशन एनर्जी लो हिथिबो, अदर आटम रो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हिथिबो. सो दैट जहार आयोनाइजेशन एनर्जी लो से इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो एंड जहार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई से इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिवो एंड आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टा इजी हबो. Another important factor is electronegative difference. जो टू एटम भितर बॉन्ड फॉर्म होगा जाउछि तार इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस टा ऊपर डिपेंड करुछि बॉन्ड टा आयोनिक हबो कि कोवैलेंट हबो. इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज वेरी हाई बॉन्ड विल बी आयोनिक and if electronegative difference is very low bond will be covalent. Covalent part time covalent bond रे पढ़िबा. Here आमे माने रखिबा if electronegative difference between two atoms is high then ionic bond formation is favored. So electronegative difference रे the En difference between the atoms should be high. Electronegative difference between the atoms should be very high. Okay, and electronegative difference high haba केमिति. Remember periodic table रे observe करो if आमे left to right move करिबा along period then En difference becomes very high. So if आमे group 1 रो गोटे एलिमेंट नेबा आ group 17 रो गोटे एलिमेंट नेबा ताको भितर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाई हबो. ग्रुप 2 रो गोटे एलिमेंट नेबा ग्रुप 16 रो गोटे एलिमेंट नेबा ताले समान भितर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाई हबो एंड फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड इजी हबो. सो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नॉर्मली का भितर होची ग्रुप 1 बा 2 रो गोटे एलिमेंट थिबो अदर एलिमेंट टा ग्रुप 16 बा 17 रे थिले आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन वेरी इजी हबो बिकॉज ग्रुप 1 2 रो एलिमेंट ग्रुप 16 17 रो एलिमेंट भितर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिकम्स वेरी हाई. काहे ना लेफ्ट टू राइट को मूव कला को इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हे जाउची. सो ग्रुप 1 2 रो एनी एलिमेंट एंड ग्रुप 16 17 रो एनी एलिमेंट भितर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस टा वेरी हाई. सो फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड टेक्स प्लेस बिटवीन. सो आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड between two atoms of group 1 2 and group 16 17. माने group 1 2 भितर गोटे एटम हेतिबो सोडियम हो मैग्नीशियम हो पोटेशियम हो कैल्शियम हो एंड ग्रुप 16 17 रो गोटे एटम हेतिबो क्लोरीन हो ऑक्सीजन हो ब्रोमीन हो फ्लोरीन हो सल्फर हो. ओके दुईटा एटम भितर गोटे एदर ग्रुप 1 2 रे थिबो अन्यटा ग्रुप 16 17 रे थिबो ताले फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड इज इजी.
Students, ionic bond ର ପାଠ ଏତିକି ହିଁ. Then write down the note. Next we will enter into covalent bond. Write down.